Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss on the new scheme for taxation of virtual digital assets. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So this scheme for taxation of virtual digital assets has been introduced by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji in this Union Budget 2022. Before that, lots of confusion regarding the taxation of cryptocurrency. Even we have also recorded a video. You will get it on the YouTube channel of CSNSR. Taxation, types, and trading of cryptocurrency. At that time, before this scheme, there were lots of confusion regarding cryptocurrency income would be taxed as PGBP income, or that's speculative, or the business income, or it can be taxed and the long-term capital gain or income from other sources, because no rules, no section was there regarding the taxation of cryptocurrency in the Income Tax Act. So this scheme has been brought up by the Finance Minister Nirmala Sitharaman ji regarding the taxation of virtual digital assets. Here also she discussed about the virtual digital assets. कहीं भी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस नहीं किया, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी के अलावा शी टॉक्ड अबाउट द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. नॉट ओनली हेयर उन्होंने नॉट ओनली शी कवर्ड cryptocurrency but also like NFT. So virtual digital assets is the wide area. So if you go to the speech of Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, and where she said there has been a phenomenal increase in the transaction of virtual digital assets. Obviously, because if you go on the Bitcoin, 35 लाख का बिटकॉइन है, वन बिटकॉइन कितनी डेली लाख करोड़ की ट्रांजेक्शन हो रही है वहां पे बिटकॉइंस में. सो फॉर द टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital assets shall be taxed at the rate of 30%. So she had cleared कि आपकी जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सेल परचेज से जो भी इनकम है, you that has been taxed at the rate of 30%. Now let's first understand what's the virtual digital assets. What's the meaning of virtual digital assets? सिर्फ cryptocurrency नहीं, what other things are included? So they have amended section 2 of the Income Tax Act, और section 2 में subsection 47A inserted virtual digital assets. So जो section 2 definitions है, उसमें they have inserted virtual digital assets definition. So it's the virtual digital assets means A, B, C, any information or code or number or token not being Indian currency or the foreign currency generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value exchange with or without consideration, with the promise or representation of having inherent value or function as store of value or a unit of account, including its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment scheme, and can be transferred, stored, or traded electronically. So I told you, यहाँ उन्होंने उसका एक वाइडर रेंज, नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी. यस, ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी इज आल्सो इंक्लूडेड, बट nowhere she had mentioned either in budget speech or the finance bill. But yes, from this definition, 99% cryptocurrency is included. And in section 2B, इसमें देखते हैं, a non-fungible token or any other token of similar nature by whatever name called, and then any other digital assets as the central government may by the notification in the official gazette specify. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर किसी भी एसेट्स को, डिजिटल एसेट्स को, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स स्पेसिफाई कर सकती है बाय द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, provided that central government may by notification in the official gazette exclude any digital assets from the definition of virtual digital assets subject to such condition as may be specified there.
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में इन्होंने नॉन फंजिबल टोकन को उसका एक्सप्लेनेशन दी है, एंड देन व्हाट्स द करेंसी, फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी। सो नॉन फंजिबल टोकन मींस सच डिजिटल एसेट्स as the central government may by notification in the official gazette specify। तो we'll have to wait for the central government notification, उसमें इसकी डिटेल उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगी ऑफिशियल गजट में। देन करेंसी, फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी, सेम मीनिंग विच डिफाइंड इन द फेमा। फेमा में जो डेफिनेशन है करेंसी की, फॉरेन करेंसी की, इंडियन करेंसी की, सो दैट्स as per the FEMA Act 1999। So this is the definition of virtual digital assets, जिसमें उन्होंने काफी कुछ कवर कर लिया, इंफॉर्मेशन कोड, नंबर, टोकन generated through cryptographic means or otherwise, so many things covered in this virtual digital assets। so virtual digital assets के बाद now she said the sales transfer of income from transfer of these assets, virtual digital assets, will be taxed at the rate of 30%। but from which section? so एक new section insert किया है, section 115 BBH, tax on income from virtual digital assets। so section 11 BBH जो इन्होंने इंसर्ट किया है, it says where the total income of an assessee include any income, where the total income of an assessee include an income from the transfer of any virtual digital assets, then the income tax shall be payable shall be aggregate of the amount of income tax calculated on the income of transfer of such virtual digital assets at the rate of 30%, and the amount of income tax which with which the assessee would have been chargeable had the total income of the assessee been reduced by the income referred in clause A। मीन्स अगर आपकी टोटल इनकम में कुछ पार्ट है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच वर्चुअल एसेट्स, कुछ इनकम है, तो वो जो पार्ट है दैट वुड बी टैक्स फ्रॉम द 30%। बाकी जो आप नॉर्मल जिस हिसाब से आप टैक्सेशन कैलकुलेट करते हो, टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो, यू कैन कैलकुलेट द अदर इनकम फ्रॉम दैट साइड। बट इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच वर्चुअल एसेट्स, जो इनकम है ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हमने अभी डिस्कस किए, उसके ट्रांसफर से जो आपको इनकम जनरेट हो रही है, दैट्स टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। क्लियर है? बिकॉज दैट यू हैव टू शो इन योर आईटीआर। आपको आईटीआर में आपको टोटल इनकम जनरेट कर, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। टोटल इनकम में यू हैव टू सी हाउ मच इज द इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उसको 30% से टैक्स कर देना है। बाकी जो रिमेनिंग इनकम है दैट यू हैव टू सी कोई स्पेशल सेक्शन है या विच सेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके दैट वुड बी योर दिस वन टैक्सेबल अमाउंट। एंड देन it says notwithstanding anything contained in any other provision of the act, no deduction in respect of any expenditure other than cost of acquisition or allowance or set of any loss shall be allowed to the assessee under the provision of this act, computing the income referred to in clause A of subsection 1। तो it says कि जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो योर इनकम, देन ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने उसमें से रिड्यूस करनी है, नो अदर एक्सपेंडिचर। कोई अदर एक्सपेंडिचर, सेट ऑफ लॉस, इट्स नॉट अलाउड। सिर्फ लाइक इफ आई परचेज ए virtual digital assets at rupees X amount and then I sold it at the Y amount, so then Y minus X only cost of acquisition, सिर्फ जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही रिड्यूस करनी है, नथिंग अदर देन, कोई अदर एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। एंड देन इन बी इट सेज नो सेट ऑफ लॉसेस, मींस कोई सेट ऑफ आपकी अगर आपको इसमें लॉस हो जाते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर, तो उसके लॉस को आप किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, एंड आल्सो यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड इट। आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई लॉस हो जाता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, यू कैन से कि मैं इसको अदर इनकम के साथ सेट ऑफ कर लूँ या इसको कैरी फॉरवर्ड कर लूँ, नो, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो क्लियर कि आपको जो इनकम फ्रॉम द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, इट्स टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो कैलकुलेट कैसे करना है? सेल माइनस ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देन नेक्स्ट इज गिफ्ट। अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किसी को गिफ्ट कर रहे हो, देन इट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट्स, कि जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो इन्होंने सेक्शन 56 में भी अमेंडमेंट करी है,
in explanation, there are one explanation to clause 10 of x of subsection 2 of section 56, उसमें इंसर्ट कर दिया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, कुछ एसेट्स थी वहां पे, उसी में एक और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी इंक्लूड कर दिया. सो इफ यू, अगर आप किसी को गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो जो क्लोज सेक्शन 56 में है, आपके गिफ्ट टैक्स के ऊपर 50,000 से अबव है, जो भी उसके अंदर क्लोज है, दैट वुड बी एप्लीकेबल. वो टैक्सेशन उसके हाथ में, इन द हेड ऑफ रिसिपिएंट्स इट वुड बी टैक्सेबल. देन वन न्यू क्लोज इज इंसर्टेड, टीडीएस ऑन द पेमेंट ऑफ, कि अगर आप जब टीडीएस ऑन, कट रहा है, टीडीएस ऑन द पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, कि अगर उसमें जो सेक्शन न्यू सेक्शन 194S को इन्होंने इंसर्ट किया, एक न्यू सेक्शन अंडर टीडीएस. तो व्हाट इट सेज, जो सेक्शन 194S है, इट सेज एनी पर्सन, सी द वर्ड एनी पर्सन responsible for paying to a resident, here the word any person and the resident, any sum by way of consideration for transfer of a virtual digital assets shall at the time of credit or such amount to the account of the resident, or at the time of payment of such sum by any mode. चाहे आप किसी भी मोड में पेमेंट कर रहे हो, चाहे इंडियन रुपीज में, डॉलर्स में, किसी में भी, कहीं भी स्पेसिफाई नहीं करा, या उनके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ सच सम एज इनकम टैक्स. तो आपको एनी पर्सन मीन्स कोई भी आपको पेमेंट कर रहा है फॉर दिस वन ट्रांसफर ऑफ दिस डिजिटल एसेट्स, फॉर कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स, दैट इट्स द ड्यूटी कि आप 1% टीडीएस कर ले. बट यस, सबसेक्शन 3 इट सेज अबाउट द मॉनेटरी लिमिट, कि आपको कितने अमाउंट तक काटना है, कि कितने भी अमाउंट है उसके ऊपर काटना है. नो, दे हैव मेंशन अबाउट द स्पेसिफाइड एंड द नॉन स्पेसिफाइड पर्सन. जो 194S है उसके सबसेक्शन 3 में इट सेज अबाउट द मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट. तो स्पेसिफाइड पर्सन है, कौन है स्पेसिफाइड, देन व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन. तो स्पेसिफाइड पर्सन एक्सप्लेनेशन में जो बताया इन्होंने 194S के अंदर, इट सेज being an individual or HUF if total sale या gross receipt turnover from the business carried on by him or the profession, कि अगर बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस के केसेस में इट्स नॉट एक्सीडिंग 1 crore रुपीज, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज. तो एंड किस ईयर्स का, it's provided in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which such virtual digital assets is transferred. Means अगर 2022 में ट्रांसफर हुई है तो इससे पिछले वाले ईयर्स में आपको चेक करना है एज पर फाइनेंशियल ईयर, जो आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में. क्लियर. तो स्पेसिफाइड में, एंड सेकेंड, इफ इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर द पीजीबीपी, अगर पीजीबीपी की कोई इनकम नहीं है, देन आल्सो स्पेसिफाइड पर्सन. सो स्पेसिफाइड पर्सन में कौन है, इफ इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर पीजीबीपी की कोई इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन में, बिजनेस केस में नॉट एक्सीडिंग 1 crore, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, एंड देन नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, तो इट्स द स्पेसिफाइड पर्सन. सो इट्स क्लियर, 194S में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1%, एंड 1% भी कब डिडक्ट करना है, स्पेसिफाइड, नॉन स्पेसिफाइड पर्सन. स्पेसिफाइड पर्सन में कब डिडक्ट करना है, अबव 50,000, and non-specified above 10,000. So, as per summary of this scheme, this scheme which has been brought up by the finance minister in this union budget 2022, so now it's clear कि आपकी जो क्रिप्टो करेंसी या ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना है, एंड कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड देन ओनली लॉस जो भी आपका थ्रू कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के थ्रू लॉस है, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी और इनकम से, एंड आल्सो यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड इट. एंड देन टीडीएस, आपकी जो मॉनेटरी लिमिट है स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड के केस में 1%, एंड देन अगर आप गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो, देन गिफ्ट के केसेस में इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेक्शन 56 विल बी एप्लीकेबल. सो दिस इज रिगार्डिंग द न्यू स्कीम.